Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study Corner. Fpsc, SST, TGT lecture subject specialist pedagogy professional पार्ट के साथ हाजिर है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने तमाम टॉपिक्स को तकरीबन कवर किए। 8 पार्ट तक हमने डिस्कस की हैं। आज हम रिसर्च टेक्निक इन एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Our first question is which types of correlations are used in the educational research? ये तीनों जो है इसके अंदर यूज होते हैं। The right answer is the D. Which type of statistical data are used in the educational research? Statistical data. Which type of statistical data used in the educational research? Educational research ये descriptive और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिकल एनालिसिस दोनों होते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, ये दोनों है। Which is not the goal of scientific method of acquiring knowledge? It's a very simple control. Which is the modern method of acquiring knowledge? मॉडर्न मेथड जो है एक्सपर्ट ओपिनियन को माना जाता है, जो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए। Which is the most objective psychological tool? Psychological जो tool है objective, वो intelligence test है। बहुत सारे tests के अंदर आप लोग इससे वाकिफ होंगे। Intelligence test होता है। Which is the best measurement of the social status? Sociometry. It's a very simple, नाम से ही आप जान सकते हैं। Which techniques are most used in the educational research? Educational research में कौन से techniques जो है ज़्यादा यूज होते हैं? क्वेश्चनेयर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेशंस जो है सबसे ज़्यादा, ये टेक्निक जो है ज़्यादा यूज होता है। The main concept behind doing research is to study and explore new knowledge, get new ideas, define clear objective, या none। तो इसमें से राइट आपका आंसर है get new ideas. The main concept behind doing research is get new ideas. In order to begin research, one must start with the number of clear goals, start with the several predefined objectives, or have a well-defined research method. Of course, start with the several predefined objectives. Descriptive research study is a category research that aim to analyze the characteristics of the something. Types of research by purpose. ये बात जो है आपने यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस भी आ सकता है। अगले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस कौन कौन से हैं। जी आपके पास बेसिक अप्लाइड है, एक्शन है, तो ये तीनों है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है डी है। द रिसर्च कंसर्न विद द क्लासरूम प्रॉब्लम इज एक्शन रिसर्च। ये वेरी सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट ऑफ द पास्ट इज अ पास्ट इवेंट को जो एक्सप्लेन करते हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। क्रिटिसिज्म इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्रिटिसिज्म। जी कौन से रिसर्च में ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, और एक्शन रिसर्च में, या हिस्टोरिकल रिसर्च में? तो क्रिटिसिज्म जो है हिस्टोरिकल रिसर्च का ये क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। Cause and effect relationship established in experimental research. Very simple. So it's all about research techniques in education. So next video के साथ फिर हाजिर होंगे। Thank you so much.